Okay, sir. Hello, everybody. Today we'll start with topic OpAmp. And all of you know that the GATEFORUM is providing this interactive session for the student who wants to prepare GATE 2020. Sorry, GATE 21. Okay. And ये जो टॉपिक है OpAmp, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Every year there is one or two questions always asking from OpAmp. Every year 1 or 2 questions is always from the OpAmp. Minimum 2 mark, कम से कम 2 मार्क के लिए पूछेगा. Either it may be a EC branch, electrical branch, or instrumentation branch. 100% they will ask a question on OpAmp. Okay, so please be prepared for this topic, and today I will try to clear some important concepts in OpAmp. So we will solve today near about 8 to 10 numericals of OpAmp. In that, I will try to explain some little bit concepts or some important points which you have to remember during the solution of OpAmp or during the solution of questions regarding OpAmp. Okay, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए OpAmp के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और कहाँ पे गलती होती है. तो कुछ चीजें आपको समझ में जरूर आएगा. चलिए देखते हैं, एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको कुछ मैं बताने की भी कोशिश करूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है. ओके. चलिए, बहुत अच्छा. ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है. इसमें सबसे पहले क्या समझना है, OpAmp, the numericals of OpAmp are classified into 2 types. First one is inverting type and non-inverting type, or we can say that the application of OpAmp. First one is open loop. See, यदि आपने इस क्लासिफिकेशन को समझ लिया, जो OpAmp का क्लासिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो आप इजीली डिफरेंट पॉइंट्स को रिमेंबर कर सकते हो. और सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि OpAmp में ऐसा कोई बहुत बड़े ज्यादा फॉर्मूलेस याद नहीं रखना है. जिस स्टूडेंट को KVL KCL आता होगा वो इजीली OpAmp के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. जिसको भी KVL KCL आता होगा वो इजीली OpAmp के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. They can easily solve it. Not a big deal. Open loop application. First one is open loop application. Open loop application. Okay. Open loop application. And the second one is closed loop application. Closed loop application. Closed loop application. Open loop application और closed loop application. Open loop application में क्या करना. ओपन लूप एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है, OpAmp एज अ कंपैरेटर. OpAmp एज अ कंपैरेटर. OpAmp as a comparator is the only application in open loop.
Okay, and in closed loop again it is classified into two different parts. One is inverting mode, and one is non-inverting mode. In closed loop application, one is OpAmp is used in inverting mode application, and in another one it is used in non-inverting mode application. ये दो तरीके हैं. इसमें क्या होता है, OpAmp इन्वर्टिंग मोड में रहता है, इसमें नॉन इन्वर्टिंग मोड में रहता है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. इसमें क्या है, अच्छा इससे भी पहले एक स्टेप यदि और पीछे जाते हो तो एक मिनट, थोड़ा सा ये देखिए. क्लोज लूप में दो प्रकार है. इससे भी पहले, बिफोर दैट वी कैन से दैट इट्स अ नेगेटिव फीडबैक and positive feedback. Okay, this is a basic. Okay, negative feedback and positive feedback. Remember this. This is a negative feedback and this is positive feedback. In that negative feedback, there are a lot of applications, just like amplifier, adder, subtractor, everything. And here it is a Smith trigger and lot of things. So see, if you know the applications, what is the actual application, then you can easily solve the numerical. So please, closed loop application, in that it's a negative feedback and positive feedback. In the negative feedback, you can say inverting and non-inverting. Inverting and non-inverting. इसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में, बट इसमें नहीं. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में नहीं होगा ऐसा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं इसे रब कर देता हूं. ओके, अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में क्या है, ओपैम्प दिख रहा है. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय फीडबैक. फीडबैक का मतलब क्या होता है, कुछ आउटपुट से इनपुट के बीच में एक रास्ता कनेक्ट है. देयर इज अ पाथ ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड सम इनपुट. नाउ सी, आउटपुट से इनपुट के बीच में, इन बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल, व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग, सो दिस इज माइनस. In between output and inverting terminal of the op-amp, there is a one resistor R2. Hence the op-amp is in negative feedback. op-amp is in negative feedback. तो यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन. जब कभी भी op-amp के किसी भी न्यूमेरिकल में, कोई जरूरी नहीं है आपको नाम याद रखना कि गिवन op-amp एडर है, सबस्ट्रैक्टर है, कि कौन सा सर्किट है, क्या है. ओके, निगेटिव फीडबैक है तो दो लॉ लगेगा. एक तो लगेगा, फर्स्ट पॉइंट इज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट. क्या होता है ये, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस. व्हाट इज मीन बाय V प्लस एंड V माइनस. V प्लस और V माइनस का मतलब क्या होता है, ये है वोल्टेज एट इन्वर्टिंग नोड, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग नोड, एंड ये होता है वोल्टेज एट इन्वर्टिंग नोड. वोल्टेज एट इन्वर्टिंग नोड. एक तो पॉइंट ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा पॉइंट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द op-amp इज वेरी हाई. इनपुट रेजिस्टेंस
of the OpAmp is very high. That is Ri is nearly equals to infinity. Okay, तो यदि आप इसको therefore input current to the OpAmp is 0. I equals to 0. Input current to the OpAmp is 0. ओके यदि आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में सॉरी सर्किट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा. डायग्रामेटिकली फॉर्म में देखेंगे तो ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये कुछ ऐसा. यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होगा, यहाँ का जो होगा वो इन्वर्टिंग होगा. और ये जो जो करंट है I1 ये 0 और मान लो ये I2 ये 0. इनपुट करंट टू द OpAmp इज 0. ये V0. इसका मतलब ये होता है. तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके ध्यान में होना चाहिए. You should always remember these 2 points regarding the application of negative feedback of OpAmp. You can apply these 2 rules in every negative feedback. जहां भी आपको नेगेटिव फीडबैक दिखे आप वहां पे ये 2 रूल लगा सकते हो. You can directly apply these 2 rules wherever you found the negative feedback. You can directly apply these 2 rules wherever you found the negative feedback. Okay, in OpAmp numerical. इसको आप ध्यान रखेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहां जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? See, there is a resistor connected between output and inverting node, so it creates a negative feedback. R2 develops a negative feedback in the system. जैसे ही R2 negative feedback develop कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा. ये V प्लस और ये V माइनस इक्वल होगा. ओके बहुत ही इजी है. अब देखिए इसको समझना है तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए. यू शुड नो द बैकग्राउंड. व्हाट इज द एक्चुअल बैकग्राउंड? okay, so see here, I will draw some figure. This plus minus V0 here. This is V2. R2, R1, R1, R2, and this is V1. This is V1 and V2. ओके इस सर्किट को आप देखिए तो क्या होगा. मैंने बोला 2 रूल लगाना है. तो बाय यूजिंग वर्चुअल नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा तो ये V प्लस और ये V माइनस. तो V प्लस इक्वल्स टू V माइनस due to virtual ground concept. And we know that the input current to the OpAmp is 0. This should be 0. Means entire current will flow through here and here. So V minus क्या होगा? V minus क्या होगा? देखिए इस V minus को देखोगे तो यदि यहाँ पे करंट 0 है, if the current through this part is 0 means these two appear in a series. Or I want to tell you one more shortcut. If the such type of connection is given, V1, V2, this is R1, this is R2, and this is Vx. If you want to calculate the Vx, you can directly calculate V1 R2 plus V2 R1 upon R1 plus R2. Similar, see here,
By using same concept, V minus, you can write directly V minus. What is V minus? V minus will be V1 into R2, V1 into R2 plus V0 into R1 divided by R1 plus R2. This is, and now this point is V plus ना, और see यहाँ पे देखिए, these two are in series because the current to the input, the current flowing to the input of the op-amp is 0. So the V plus will be V2 into R2 divided by R1 plus R2. Now by using virtual ground concept, you can equate it. So we'll get V1 R2 plus V0 R1 divided by R1 plus R2 equals to V2 R2 divided by R1 plus R2. You can cancel it. Okay, so VO equals to V2 R1 minus V1 R2 divided by R1. Sorry, this is R2. So here R2 by R1 equals to, sorry, V1 okay, so it is V2 minus V1. And now see, if you remember this is R2 by R1, this is V2 minus V1. This is a standard subtraction differential amplifier, difference amplifier. ये क्या है? स्टैंडर्ड डिफरेंस एम्पलीफायर है. यदि आपको याद हो, यदि आपको समझ में आया हो, कब ये आएगा? जब ये वैल्यूज इक्वल होंगे, जब ये वैल्यूज इक्वल होंगे, R1 R2 R1 R2. सिमिलर केस है. अब इस न्यूमेरिकल में देखिए R1 R2 R1 R2 R1 ये इक्वल दिया गया है ना, ये इक्वल है. इक्वल है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम है कंसेप्ट. यहां देखिए, यानी कि यही फॉर्मूला लगेगा. इफ यू रिमेंबर इट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस. यदि आपको पता है ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, तब तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे. ध्यान से समझना, यदि ऐसा इक्वल दिया हो तो स्टैंडर्ड सर्किट है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे. यदि आपको नहीं पता है कि ये स्टैंडर्ड है, तब तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. और ये क्या होगा? ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि रजिस्टर में करंट एंटर कर रहा है यहां से, प्लस माइनस. और इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम. द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 किलो ओम. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, 1 किलो ओम. तो 1 किलो ओम into 0.5 milliampere, it is 0.5 volt. The potential difference is 0.5 volt. These 2-point potential difference is 0.5 volt. So you can directly put it here, 12 by 10 into 0.5. That is 1.2 into 0.5. That is equals to 0.6 volt. तो यदि आपको पता है, यदि आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअल सर्किट क्या है, तो एक स्टेप में आंसर आएगा. अदरवाइज आपको एक दो स्टेप्स सॉल्व करने पड़ेंगे. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज नोट डाउन इट फास्ट. ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे.
दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए अगेन कुछ तो बहुत टफ सर्किट दिया गया है, ओके। बट यदि आप ध्यान से देखोगे, प्रॉपरली फोकस करोगे, तो ये जो सर्किट है ये वाला, ये ब्रिज है, बट ये बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट अपोजिट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज नॉट बैलेंस्ड। बट दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, डिफरेंस एम्पलीफायर है, और यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, ब्रिज लगा दिया गया है। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए इस 10 वोल्ट के कारण जो भी करंट फ्लो होगा, द करंट फ्लोज ड्यू टू दिस 10 वोल्ट is divided into two parts, this and this, okay, and this। so यहां पे दो वोल्टेजेस मिलेंगे, एक वोल्टेज मिलेगा V1, मान लेते हैं यहां पे है, एक है ये V2। ओके, और ये स्टैंडर्ड है, क्यों स्टैंडर्ड है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज R1 R2 दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि स्टैंडर्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो R2 by R1, और डिफरेंस होगा V1 minus V2। okay, now our aim is to calculate V1 and V2, how you will calculate the V1 and V2। okay, तो see V1 equals to 10 volt by using voltage division rule, by using voltage division rule, 10 volt into, let this is RA, RB, RC, and this is RD। RC, because this voltage means this point to ground, and only this point to ground, only 100 ohm is connected, RC is connected, divided by this RA plus RC। RA plus RC equals to 10 into 100 divided by 100 plus 100। okay, just a minute, 100 plus 120, it should be 120। 120, it will be 4.55 volt। okay, and V2 equals to 10 into RB upon RB plus RD। अगेन ये क्या है, 10 into 100 divided by 100 plus 100 equals to 5 volt। so VO equals to 1.2, बिकॉज इस पे आपको पुट करना होगा R2 डिवाइडेड बाय R1 पे, तो 1.2 क्यू 12/10। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 12/10 and 4.55 minus 5, it is minus 0.54 volt। 0.54 वोल्ट, सेम कंसेप्ट। अब कंफ्यूजन क्या है कि करंट इधर क्यों नहीं जाएगा, यदि ये करंट इधर आया तो इन दोनों में ही क्यों फ्लो होगा, इन दोनों में ही क्यों फ्लो होगा। देयर इज टू रीजन। अब बहुत सारे लोगों का कहना है, यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां यहीं पे डाउट है, व्हाट इज द एक्चुअल डाउट, क्या होता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां से जो बहुत सारा खिचड़ी हो गया ना, इसको हटा देते हैं। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए,
The current will be come here, it will go here, it will go here, it will go here and here. If it is I1 या I है, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, करंट तो यहां जीरो होना चाहिए ना, यहां क्यों जीरो होगा? हियर इट विल नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि करंट यहां तो आएगा, यहां से इधर फ्लो होना चाहिए ना, ये इधर क्यों निकल गया? मैंने क्या किया है, मैंने इसको भी I2 मान लिया है और इसको भी I1 मान लिया। मैंने क्या बोला है? इक्वल मान लिया, सेम करंट विल फ्लो हियर according to my solution, and you have to do that only to solve this circuit. Why the current will not flow here and why I have not considered that the current will flow this part? मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? कारण है, there is some reason behind that. See what is the reason. You can ask, sir, current can flow through this branch, na? This current will flow and here this part and this part. But see what is actually the value of R1 is how much? It's a 10k, it's a 12k, okay, and here the current will be 0. That's why these two are in series. ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। और जब सीरीज में होंगे तो ये कितने हो गए? 10 plus 12, that is 22k. That means 22,000 ohm, and here it is only 100 ohm. It means what? इसका मतलब क्या है कि we know that the current is always flowing through the low resistance path. अब जब दोनों में बराबर है, दोनों में क्या है? ये देखिए यहां पे क्यों फ्लो होगा? यहां पे बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा. The current flow through the same here. These two are in also series ना, इसीलिए करंट यहां मैक्सिमम फ्लो नहीं करेगा. Here the current is approximated to zero, not equals to zero, but it is nearly equals to zero. Okay, it's a network theory. इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. अब समझ में आया है तो प्लीज पुट अ कमेंट, यस और नो, यस और नो. यदि इसमें कोई डाउट है तो पूछो, यस और नो. इसीलिए करंट इधर फ्लो नहीं होगा, और जब करंट इस साइड हम जीरो मानते हैं तभी ये दोनों सीरीज में आएंगे और हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं. यू कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल, देन ओनली यू कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल. नो अदर ऑप्शंस इज अवेलेबल. If you have any doubt, please ask me. I'm ready to explain each and everything. Okay. We'll move towards the next important question. इस क्वेश्चन को देखिए और सी this point is not connected here. It is look like this. This is actual question.
Okay. Now see here. इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप इस सर्किट को प्रॉपर रिड्रॉ करोगे तो ये बहुत सिंपल सा ओपैम्प बनेगा। दिस सर्किट इज वेरी सिंपल इफ यू विल ड्रॉ इट प्रॉपरली। ओके, देखिए क्या होगा। यहां पे ये है ओपैम्प, माइनस प्लस। See, this part is not connected here, na? Means you can draw it simply this way. And this is 5 kilo ohm. Okay, you can draw it in this way also. $90 ohm. This is 100 ohm. This is a circuit. 100 ohm, 5 kilo ohm, and here it is a 4 volt. Here it is a 4 volt given. Both numerical are same. This is very simple structure. Both numerical is exactly same. Okay, but see, in the examinations, the lot of the student will consider that this point is connected here, how we can solve the circuit, both feedback is appearing here. Okay, you have to see properly, you have to focus on the question properly. आप ऐसे नहीं भाग सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट है। सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट। देखिए क्या है, यहां पे प्लस माइनस R1 R2 this is RF RS, let this is V1 and this is V2 and this is VO, and you have to find out the output voltage. How you will find out the output voltage? आउटपुट वोल्टेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना इतना टफ नहीं है, यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। ओके, by using superposition theorem, सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल कंसीडर द V1 को हम कंसीडर करेंगे एंड V2 को 0 करेंगे, ग्राउंड करेंगे। तो क्या होगा,
ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। जस्ट अ मिनट, आई एम कॉपिंग इट, कॉपी पेस्ट एंड सी हियर। इसमें क्या चेंजेस होगा कि V2 को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। जस्ट लाइक दिस, V2 इज ग्राउंडेड, 0। ओके, V2 को हमने ग्राउंड कर दिया। V1 है तो OpAmp इज इन नॉन, और OpAmp एक्टिंग एज अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। OpAmp acting as a non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier. अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है ना, या गेन जो होता है आउटपुट बाय इनपुट, वो होता है, देखिए मिस्टेक कहाँ होती है, 1 + RF/RS, और इसके साथ हम क्या मान लेते हैं, 1 + RF/RS इंटू VS, VO इक्वल्स टू। और स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे प्लीज फोकस करिएगा कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसी को ये VS या V1, चाहे VS मान लो या V1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, बट ये गलत है। डायरेक्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, ये होता है V+, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग नोड। दिस इज एट वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग नोड, ये याद रखिएगा, नॉन इन्वर्टिंग नोड। इसका मतलब ये जो होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट V+ के लिए। तो जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो V+ क्या होगा, V1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ही होगा, ये सीरीज में है दोनों, अपॉन R1 + R2, और हम इस पूरे को ले जाके यहाँ पुट करेंगे। ये है एक्चुअल कंसेप्ट, क्योंकि आपको दिया गया है V1 ना कि V+। V+ is not given, V1 is given. Please be focused on this point. It's important. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसको पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब सेम में यदि आप OpAmp को नॉन इन्वर्टिंग मोड से हटा के क्या करना है इसमें, देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, V1 इक्वल्स टू 0 मान लेंगे और V2 इक्वल्स टू, V2 को कंसीडर करेंगे, तो V1 क्या हो जाएगा, 0। और OpAmp कैसे एक्ट करेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह जब डील करेगा, ये एक्ट करेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह जब बिहेव करेगा, तो इससे समझ में हमें ये आता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, और आपको ये भी पता है कि -RF/RS होता है, -RF/RS, तो VO इक्वल्स टू -RF/RS इंटू VS, और इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो ये, तो VS विल बी V2 डायरेक्टली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो था सुपरपोजिशन। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट आउटपुट क्या होगा, एक बार इन्वर्टिंग के कारण, एक बार नॉन इन्वर्टिंग के कारण, तो फर्स्ट हो जाएगा -RF/RS इंटू VS, फिर 1 + RF/RS इंटू VS, ये है सुपरपोजिशन के कारण। बहुत इजी कंसेप्ट है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन को आप एक एक स्टेप में सॉल्व कर सकते थे। अब इसका मतलब देखिए, ये जो 4 वोल्ट है वो यहाँ भी अपीयर हो रहा है, यहाँ भी इक्वल अपीयर हो रहा है, तो एक बार इन्वर्टिंग में जाएगा, एक बार नॉन इन्वर्टिंग में जाएगा, और दोनों में जाएगा तब आपको पॉइंट यदि याद है OpAmp का, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -RF/RS, क्या आएगा, -RF/RS, -90/100, दिस इज RF, this is RS, into VS is 4 volt, plus 1 + RF/RS, RF is 90 by RS is 100, into
अब यहाँ पे क्या है कंफ्यूजन, वही जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं उसी मिस्टेक को आपको ओवरकम करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है ये वाला पोटेंशियल V प्लस, और ये क्या होगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, यानी कि 2 वोल्ट। इसका मतलब 2 वोल्ट। ये क्या आएगा -3.6 प्लस 3.8 इक्वल्स टू 0.2 वोल्ट। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, इस पे आपको फोकस रहना चाहिए, इसमें ये मिस्टेक आप नहीं कर सकते हो। ओके तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। क्या बोल रहा है, assuming OpAmp to be ideal, find the current I passing through 1 kilo ohm resistor. You have to find the current I passing through 1 kilo ohm resistor. आपको फाइंड आउट करना है कि 1 किलो ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। प्लीज अब देखिए, यहां तो करंट 0 जाएगा, ये सारा का सारा करंट, द एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच एंड इट विल कम हियर। ओके, this point this I is coming and this is output voltage. How you will find out? Now see, this point is grounded na, 0 volt, means here it is also 0 volt due to virtual ground concept, due to virtual ground concept. So here by using virtual ground concept, we know that the potential will divide equally okay, see here. This resistor is connected to this point to ground, and this resistor is also connected to this point to ground, means both are in parallel, and we know that the voltage across the parallel resistors, and मैं ऐसा कह सकता हूं कि parallel में voltage
In parallel, the voltage is same. The voltage across all the parallel element is same. So here, see, the current is entering, this will be plus and this will be minus. And here it will be a 2 volt. Kilo and milli will be cancelled. So here also, just a minute, the polarity will be reversed. Minus and plus, it is also a 2 volt. Current is in this side is plus, this side is plus, means current will enter here. 2 volt by 2 kilo ohm, it is 1 milliampere. And now apply the KCL at this point. If you will apply the KCL at this point, we'll get this I. See, this I is incoming. Means how much? 1 milliampere is incoming. Means this is 1. This I is also incoming. See, this I is also incoming. It means this is I. And see, this I is also coming here. Means plus 1 equals to 0. So I will be minus 2 milliampere. Minus 2 milliampere. Venkata. Sir, why V is directly taken as 4 volt? In last question you are asking, na? See, Venkat, we can directly say here, in C here, you can draw this is just like this. Just a minute. You can draw this circuit as this circuit. Both are equal. Same 4 volt. You can give, this is 4 volt and this is 4 volt. Both are equal, Venkat. Okay, both are equal. Whatever I have drawn previously and this is both equal. Because here also it is a 4 volt and here also it is a 4 volt. So don't worry about it. It is given in the question itself. See, both point is same potential, na? Okay. Come to our present topic. This is present question. So in this way, we can solve it very easily. Next question. We'll move towards the next question. Okay. See, in this question, it is given that both the amplifiers are amplified by the same amplification factor. Both the amplifiers are amplified by same amplification factor. For the given circuit, if the input voltage V plus and V minus are to be amplified, see, V plus and V minus are to be amplified by the same amplification factor, then R should be. Then R should be. If it is amplified by the same amplification factor, then R should be. What should be the value of R?
If both are amplified by the same amplification factor, then what should be the value of R? Okay. See here. क्या बोल रहा है? V plus और V minus are to be amplified by the same amplification factor. अब amplification factor क्या है? We know that OpAmp, just a minute. OpAmp as a inverting amplifier, the output voltage is minus RF by RS into VS. Apart, see, minus sign indicates, negative sign indicates, क्या इंडिकेट करता है? 180 डिग्री फेज shift between input and output. Okay, input and output. Or other way, we can say that minus sign indicates that the input voltage is applying at inverting mode, nothing else. Okay. So here, this RF by RS is an amplification factor. RF by RS is what? See, this RF by RS is an amplification factor. Output is how much times amplified or greater than input. How much times it is amplified? कितने टाइम्स इसको एम्पलीफाई किया है? एम्पलीफिकेशन फैक्टर. Okay, same OpAmp as non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier में गेन क्या होता है? गेन आउटपुट क्या होगा? 1/RF/RS into VS. और ये वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. ये क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है. ओके. तो क्या कह रहा है? इसके कारण जो गेन मिलेगा और जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आर टू बी सेम, देन आर शुड बी, therefore due to V minus, A minus is a gain, and it is minus RF by RS, and it is minus 22/10. That is minus 2.2. This is K, it's cancel. It's a minus 2. And if we will magnitude of it, it is 2.2. Then A plus, let this voltage is VA. So A plus is 1 plus 22/10 into, just a minute, there are two concepts. See, there is some numerical changes. First, VO by V plus. A plus will be VO by V plus. So shall I write this? VO by VA into VA by V plus. Definitely I can write it. So VO by VA will be
1 plus RF by RS, and VA by V plus will be, what is VA? VA should be V plus into R divided by R plus 15. So VA by V plus should be R plus 15. इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे R अपॉन R plus 15. ये हो गया. Then 1 plus 22 by 10 into R upon R plus 15. अब दोनों क्या है? सेम है, एम्प्लीफाइड बाय द सेम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. तो यहाँ पे क्या होगा? 22 2.2, it's a 3.2 R upon R plus 15. If it is amplified by the same amplification factor, means you can equate it, same amplification factor, due to same amplification factor. We can equate it. It is given in the question itself. Same amplification factor. So we can equate it. अब क्या है? 2.2, 3.2 R upon R plus 15. So R should be, if you will calculate it, it is 33 kilo ohm. It is 33 kilo ohm. R क्या होगा? 33 किलो ओम होगा. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. In this way we can solve it. Next question. This is question. Find VC, IC and IE for the circuit shown. Okay. Find VC, IC and IE for the circuit shown below. See, simple. Again, there is something connected from output to inverting terminal. So the OpAmp is in negative feedback, and we can apply the virtual ground concept. So due to the virtual ground concept, we know that V plus equals to V minus due to virtual ground concept, and this should be 2 volt. This is 2 volt, means this point should be also 2 volt.
डायरेक्टली कनेक्ट है तो 2 वोल्ट होना भी चाहिए। अब आपको इतना तो जरूर पता है कि यहाँ करंट 0 होगा ड्यू टू द very high input resistance of the op-amp. And I already told you that, please remember 2 points. When the op-amp is in inverting mode, input resistance should be very high. You have to consider that the input resistance of the op-amp is very high and the input current to the op-amp is negligible, that is 0. This is VC, means this point to ground is 2 volt and here it is a 6 volt. Means higher potential to lower potential, definitely the current will flow through this, and this is IC. So the IC will be 6 minus 2 divided by 2. That is 2 milliampere. Okay. Okay, Venkat, just a minute. I'm telling you. See, in the question, listen it very, very carefully, Venkat. In the question, it is given that this is a V plus. Now, what is the actual doubt? Na? We always considering that V plus is here. In our syllabus, in our regular day-to-day practice, we always consider that the V plus is appearing here. But in the question, it is given that the V plus is here. It's the only name. You can write here Vs also. You can write it here Vx also. You can write it here Vy also. Okay, Venkat. So, this to this, you have to remember this formula Vo by Vs or something else 1 plus Rf by Rs into some voltage, input voltage. This input voltage means up to this point only, na? Up to this point only. This formula is only for this, not more than that. Okay, Venkat? But what is in this question? They are talking V plus, and V plus is this, not this here. So here I have considered this is VA, some other name. Now I have divided into 2 parts. Here to here and here to here. This is the second part and this is the first part. So I have written VO by V plus, because this is V plus, na? VO by V plus equals to VO by VA into VA by V plus. VA gets cancelled, equation remains same. I think your doubt is, Venkat, clear now. Okay, so we'll move as the next our question. If you have again any doubt, please ask me. So IC is 2 milliampere. Okay, we got VC, IC and IE. See, beta is 50 na. We know that IC equals to alpha IE. IE equals to, or simply, what is alpha? Alpha equals to beta upon 1 plus beta. So, IE will be 1 by alpha into IC. So it is 51 by 50 into IC is 2 milliampere. It's a 2.04 milliampere. In this way, we can solve this question.
Okay. Next, next question. See, in this question, I'm making some change here. Please give me the answer. I will make some change. Same question. In same question, I will make some change. See, what is that change? Okay, remove this. The change is value. What is the value of R? What should be the value of R? Or question in this way, see the another question. Find the minimum value of R. Find the minimum value of R. Value of R in given circuit. In given circuit to keep silicon transistor in the saturation region. In the saturation region. What should be the minimum value of R? And where it is R? This is R. This is R. What should the value of? What should be the value of R? So that the given transistor will operate in saturation region. ओके तो देखिए इस R को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा. ट्रांजिस्टर किस में है? सैचुरेशन में. जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि VC sat is 0.2 वोल्ट. VC sat मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू. IC क्या होगा? This is 2 volt. This is VC is 2 volt. So we know that the IC will be 6 minus 2 by 2. It's a 2 milliampere. So see here, if you will apply the KVL, we'll get minus 6 plus 2 into this 2 milliampere, this 2 and this 2, plus 0.2 volt plus IE into R equals to 0. Okay, this is 6. So IER equals to 6 minus 4 minus 0.2. 6 minus 4 is 2. It's a 1.8. 1.8 or okay. And C, in the previous question itself, we calculated the IE. IE is 2.04. Therefore, IE is what in previous 2.04. In last case, we have already calculated. So the R will be 1.8. 1.8 divided by 2.04. This is in a milliampere. So this is in a kilo ohm.
We'll get in kilo. So in this way, you can calculate it. Okay. It's not very tough. There is a slight change in this question. Okay. So we'll move towards the next question. Okay, find the output voltage for the circuit shown below. Find the output voltage for the circuit shown below. आउटपुट वोल्टेज पता करना है सर्किट से, क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? See, this question is very simple and very easy. If you have a knowledge, then you can directly write out the answer. What should be the answer? See, you can directly tick out. As base is connected to ground and emitter is also connected to ground, means as base 2, or we can base emitter junction as base emitter junction of the transistor is unbiased. Base emitter junction of the transistor is unbiased. As the base emitter junction of the transistor is unbiased, therefore base current is zero. Therefore base current is zero. Base current क्या होगा? Zero. Therefore, hence IC is also zero. Hence IC is also zero. Therefore, transistor is turned off. Transistor is in cutoff mode. Cutoff mode. Transistor is in cutoff mode. That's clear. This value is 2K is given in the question. So if the transistor is in cutoff mode, means here the I will be zero. So this voltage will appear directly here, 6 volt. And due to, see, there is a path connected between, and this circuit is voltage follower. This circuit is voltage follower. This 6 volt will appear here due to virtual ground concept. This 6 volt will appear here due to virtual ground concept, and here we'll get VO equals to 6 volt. VO equals to 6 volt is the answer. VO equals to 6 volt.
Okay, next. Next question. See, this is a question. Find the feedback factor beta of the circuit shown below. Okay. What is the feedback factor? Basically, what is the feedback? See, if this is amplifier, just a minute. If this is amplifier, this is output, and this is input, and something is returned from the output. This is output, and this is VF. Either it is plus minus or minus plus. Just a minute. This is a feedback, and this is a factor. Feedback factor, feedback network. This particular part is a feedback network. ये क्या है? फीडबैक नेटवर्क है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? फीडबैक नेटवर्क है। तो फीडबैक नेटवर्क होने के कारण फीडबैक नेटवर्क बीटा, तो VF is directly proportional to V naught, and this proportionality is replaced by proportionality constant beta, feedback factor beta V naught, or this is beta is VF by V naught, or it is not compulsory that the feedback signal is always a voltage. It should be a current also. Either it is IF or I naught. Either, so it is a VF by I naught. It can be voltage or current, anything. It is not compulsory that it should be voltage or voltage, current or current. See, okay, it should be anything. Voltage or current, current or voltage, anything. ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसीलिए हम क्या कहेंगे, फीडबैक फैक्टर निकालना है। तो फीडबैक फैक्टर कहां दिख रहा है? आउटपुट। Actually, this is a feedback signal, VF. So VF equals to, see, this output voltage will be divided into two parts. This VF will be, because here the current will be zero, na? Means these two are in series, and here it is a parallel voltage V naught. Means this and this is in a parallel, and we know that across in a parallel branches the voltage is same. So VF will be 10 into V naught by 10 plus 90. 10 plus 90. That is VF equals to V naught 10 upon 10 plus 90. It is 10 by 100, 1 by 10.
This is a very simple process. We can easily calculate it. This small टॉपिक, ये जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, फीडबैक फैक्टर कैसे निकालते हैं, ट्रांजिस्टर्स के साथ हमने ओपैम्प को लिंक किया, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है ये आपको गेट के एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और छोटे छोटे जितने भी पीएसयू एग्जामिनेशन है, जेई का एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, ठीक है, डीआरडीओ हो, इसरो हो, इन सब के एग्जामिनेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। और गेट में क्या होता है, जो गेट में आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसमें एक छोटे छोटे से पार्ट्स होंगे, आपके कैलकुलेशन के पार्ट्स होंगे। ओके, आपके जो कैलकुलेशंस आप करोगे उसमें छोटे छोटे से पार्ट्स आपको मिलेंगे, तब जाके आपको कुछ तो भी सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, इसीलिए फोकस्ड स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आपको देखिए करना क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे डायोड। डायोड में बहुत सारा पॉइंट है। जैसे क्या क्या पॉइंट है डायोड में? डायोड में है क्लिपर, क्लैंपर और सम बेसिक सर्किट्स। इसमें से ये इस टॉपिक पे और इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है डायोड। डायोड में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से ज्यादा पॉइंट्स यहां से पूछे जाते हैं। डायोड में एक छोटा सा पार्ट ये भी आ जाता है कि आप कह सकते हो रेगुलेटर करके। रेगुलेटर जो हमने ई गेट में पूरा कवर किया है, अच्छे से हमने सारा पॉइंट कवर किया है ई गेट में। यहाँ जो रेगुलेटर है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर शुड बी डेफिनेटली वन क्वेश्चन। ये टॉपिक करके ही जाना है, आपको सॉल्व करना ही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। डेफिनेटली इसमें क्या होता है, जेनर डायोड प्लस डायोड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं। जेनर डायोड और डायोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं, ठीक है। रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो आप, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो सेकंड टॉपिक है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। बीजेटी में भी 2 पार्ट है, एक है डीसी एनालिसिस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस है और एसी एनालिसिस से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे। मैं ईसी ब्रांच के लिए बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे, डायोड से एक क्वेश्चन, और वो चाहे क्लिपर पे रहे या सिंपल टॉपिक पे रहे। मैं इसी ब्रांच के लिए बात कर रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे, कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा,
DC analysis. देन एक क्वेश्चन यहां से और यहां से पक्का है, डेफिनेटली आएगा, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, फिक्स पॉइंट, वन क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे से इसी में कंसीडर हो गया। देन बचता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओपैम्प। ओपैम्प से वन क्वेश्चन कंपल्सरी, वन क्वेश्चन कंपल्सरी, there will be always one question. ये चेंज नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ओपैम्प से, ठीक है। Always there should be one question from OpAmp, minimum one question. After that, feedback amplifier is removed. There will be no any question from power amplifier. 555 timer is also removed. 555 timer is not in your syllabus in this GATE examination. It is removed. There will be no any question asking on power amplifier, no question on feedback amplifier. But the important is again MOSFET. MOSFET पे से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक JFET होगा और एक MOSFET होगा। इसको MOSFET नहीं बोल के फेट बोलती है, फेट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक JFET से क्वेश्चन आ सकता है, एक MOSFET से। MOSFET 3 सब्जेक्ट्स में कवर्ड होते हैं, डिजिटल, EDC एंड एनालॉग। 3 सब्जेक्ट्स में MOSFET का जिक्र है। देयर शुड MOSFET is discussed in 3 subjects, digital, EDC and analog. So please be focused, always one question from MOSFET, you cannot ignore it. If you will ignore, definitely you will lose minimum 3 to 4 marks, minimum one question. So I am damn sure that there will be a 2 question. I'm not talking about the mark, 2 mark question or 1 mark question, but they will ask question. So if you will properly go through the subject, 2 question, 1 question, 3, 4, 5, 6, 7 question. There should be definitely 7 question. Out of that, 2 or 3 questions will be 1 mark and rest of the question will be asked from 2 mark. Sometimes it is happen that in they will ask only 1 question on BJT. Either it may be DC analysis or AC analysis. लेकिन important point ये है कि DC analysis पे जो questions आते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए आए, ज्यादा चांस है। DC एनालिसिस पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे? DC एनालिसिस पे पूछे जाएंगे, AC एनालिसिस के लिए नहीं। DC एनालिसिस के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो डबल ई के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। डबल ई के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है DC एनालिसिस पे क्वेश्चंस, और EC के लिए AC एनालिसिस। सो minimum 6 question to 7 question you can expect from analog. So definitely if they asking 3 question 1 mark or 3 question 2 mark, so it is a 2 mark question, 6 marks plus 3 mark, 9 to 12 marks. Definitely analog is coming. So please go through this topic. Now come to our main discussion. We'll discuss some other numericals also. See, this question is important.
Okay. See, this question asked in GATE 2005. This question asked in GATE 2005. Okay. Find the value of input resistance Ri. तो Ri कहां होगा? यहां पे होगा. क्योंकि इनपुट वोल्टेज यहां अप्लाई है, इनपुट वोल्टेज हमने यहां अप्लाई किया है, ये हो गया आई, तो रेजिस्टेंस भी यही होगा. दिस इज V प्लस और ये V माइनस. तो आपको पता है V प्लस इक्वल्स टू V माइनस होता है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, and V plus equals to 0, therefore V minus is also equals to 0. So here it will be a 0. Therefore II equals to Vs minus 0 by 10K. So it is Vs by 10K. Vs by 10K. ओके, तो आई क्या होगा? आई क्या हो सकता है? We know that V equals to IR, R equals to V by I. So from here, Vs by II equals to 10K. That is Ri. That is Ri. This is a way how you will solve it. In this way, we can easily solve it. There is no so big deal in this question. ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. आपको ट्रिक पता होनी चाहिए. एक्चुअल ट्रिक क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे पता करना है. ओके. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये है आपका अगला क्वेश्चन. ये आपका अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, see what is the question. In this question they are asking E0 is measured by voltmeter, which can be calculated as E0 is measured by voltmeter, which can be calculated as option A, bias current at inverting input, bias current at inverting and non-inverting input only, input offset current only, and both bias current and input offset current. So see, first, what is a bias current and what is a offset current? See, मैंने आपको पहले ही बताया है, बायस करंट, जहां कहीं भी वर्ड बायस आए, द वर्ड बायस indicates a DC analysis. Indicates DC analysis. The word bias indicates DC analysis. Okay, the word bias indicates DC analysis.
The word bias indicates DC analysis. If it is an OpAmp, let's see, this is OpAmp, na? This is OpAmp. This is plus. This is minus. This is V1. This is V2. IB1, IB2. This is V0. Okay. In OpAmp, remember this concept. In OpAmp, IB, just a minute. I'm making some change here. See, it will be standard form. There is nothing in mistake. This is a V1 and this is V2. IB1 and IB2. Okay. In OpAmp, IB1 non-inverting current minus inverting current. If the difference is this, it indicates, it is called offset current. It is called offset current. Offset current. अब ये offset है क्या? कभी कभार क्या होता है कि सर्किट बंद है तब भी कोई आउटपुट आ रहा है. Means if there is no any input and if the input is zero, suppose if the input voltage is zero and again you are getting some output, even if the input is zero, if you are getting, please listen very carefully, if you are getting a output voltage, some output voltage, even if the input is zero, means there is a some current, there is a some input current, there must be a some input current. That input current is known as offset current. I'm repeating again. If you are getting some output without applying any input, or if you are getting some output even if the input is zero, it means that there is a some minimum current flowing input, some minimum input current. That input current is offset current. And it is the difference IB1 minus IB2. Remember it. इसको याद रखिएगा. बिना इनपुट का आउटपुट मिलना ही ऑफसेट करंट कहलाता है. और इनपुट वोल्टेज जो होगा उसको ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे. और ये क्या होगा? IB1 plus IB2 divided by 2. It is called as input bias current. It is called as input bias current. इनपुट बायस करंट. ओके, तो आपको कुछ ना कुछ देखना होगा यहाँ पे. देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे. सो यहां से मान लीजिए IB1 फ्लो होता है, यहां से मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, IB2 फ्लो हो रहा है. दिस इज V प्लस, दिस इज V माइनस. तो V प्लस क्या होगा? V प्लस करंट एंटर कर रहा है नीचे से, ये प्लस ये माइनस, तो -1 इंटू IB1 that is equals to V minus due to virtual ground concept. Virtual ground concept. ओके, और बोल रहा है कि E0 कैसे मेजर करेगा. E0 मेजर करना मतलब यहां से लेके यहां तक ग्राउंड, और अप्लाई कर दो KVL, तो क्या आएगा? -E0 प्लस
ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो 1 इंटू IB2 माइनस V माइनस आएगा और प्लस V माइनस इक्वल्स टू 0। तो E नॉट इक्वल्स टू IB2 minus IB1, that is input offset current. It means it indicates input offset current. Input offset current, इसको कहते हैं input offset current only. Option C is the right answer. Input offset current only. ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the next question. Find the voltage across the capacitor at t equals to 1 millisecond. T equals to 1 millisecond, we have to find the voltage across the capacitor. And this question is very simple. How you will calculate it? See, at t equals to 1 millisecond, t equals, देखो t equals to 0 पे switch close हो जा रहा है, t equals to 0 पे close हो रहा है, means at t equals to 1 millisecond, switch is closed. At t equals to 1 millisecond, switch is closed. Switch is closed. Okay? जैसे ही स्विच क्लोज हो गया तो क्या होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर, क्योंकि निगेटिव फीडबैक आ जाएगा। जैसे ही निगेटिव फीडबैक आएगा तो यहां से देखिए एक केसीएल यहां लगा दो, एक केसीएल इधर लगा दो, तो ये वोल्टेज हो गया। तो अप्लाई केसीएल, तो 10/1K, suppose this is a current and one current is incoming, equals to IC, and IC equals to C dVC by dt. C dVC by dt. So 10 by, ये C को इधर लेके आएंगे तो 1 into 10⁻³ 1K ना, into 1 microfarad, 1 into 10⁻⁻⁶ equals to
d by dt Vc, change in voltage Vc. Vc is what? V naught minus 10. Vc equals to what? V naught minus 10. So Vc equals to integration of this part, or just a minute, if you will solve it, it will be 10 into 10 just to power 3 minus 3 d by dt Vc. So Vc equals to 10. If you will integrate both sides, 10 into 10 raised to power 3 minus 3 t dt. So 10 into 10 raised to power minus 3 into t, that is 10 into 10 raised to power minus 3 into 1 millisecond. Just a minute, it is not minus 1 millisecond now. The milli-kilo will get cancelled here. Just a minute, it should be plus 10 raised to power minus 3 time get cancelled, that is 10 volt. ओके, सो हम क्या करेंगे, इस सेशन को इस क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है. सिर्फ यहाँ पे क्लू क्या था, यहाँ पे समझने लायक क्या था कि t इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड पे ये काम कर रहा है, या सॉरी स्विच का पोजीशन क्या होगा, स्विच का पोजीशन क्या होगा एट t इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड. व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ स्विच का पोजीशन क्या होगा. ओके, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को इस वे से सॉल्व कर सकते हैं. सो टुडे we'll end the session here, and best of luck for your GATE examinations. Please prepare well. थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से करिए, कुछ क्वेश्चंस को फोकस करिए. जो एरियाज हमने डिस्कशन किया है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या होगा. ओके, और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है. ठीक है, उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है. थैंक यू वेरी मच.